बहुत ही आपको तंग करने वाली एक चुप्पी रहती है, वो थी फुल टाइम। मैंने Okay. कहा यार इंडियन आर्मी ने शायद गलती से भेज दिया हमें यहाँ पे। ऑन 19th of December, 19th-20th of December, our location at Akobo was attacked, Hmm. where they shot 43 refugees in the UN camp, Okay. point blank range पे, pregnant females, young girls, boys, elderly, men, women, all were shot. And exactly at 6:45, a swarm of 5,000 soldiers, rebel soldiers, Rebel soldier. ठीक है, rebel army वाले, around 3 to 5,000 के बीच ये सारे stormed around our camp, and there was a total, मतलब proper war. You joined the army and fast forward to South Sudan, you become the Indian ninja. वहां पे सब आप जैसे मुझे बता रहे थे, कल भी हम जब कॉल पे बात कर रहे थे, आपको इंडियन निंजा कहते थे लोग. So what was that moment like when you were said कि okay, you will have to go to South Sudan? इनिशियली डिक्लासिफिकेशन होता है अकेडमी में, बताते हैं भाई किसे कौन कौन सी पलटन मिली है. तो मैंने सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, एंड मेरी थर्ड ऑप्शन थी राजरफ. एंड मी बीइंग, आई डिड नॉट रियलाइज इट देन, बट मी बीइंग अ सिख, आई वाज नॉट गिवन सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट भी नहीं मिली. आई गॉट राजरफ. एंड फॉर्चुनेटली द राजरफ पलटन व्हिच आई गॉट वाज वेरी यूनिक. It had a composition of 50% Rajput, 25% Jat, and 25% pure Muslim. Yeah, yeah. So our Paltan was very unique in its way, how our social structure was. इसमें ज्यादा कंपटीशन होता है. तो कास्ट स्ट्रक्चर ऐसा बना पड़ा है कि सब अपना कंपटीशन, स्पोर्ट्स हो या घातक का हो जाए, ऑब्स्टिकल कोर्स हो जाए, फायरिंग हो जाए, यार एक कट्टर टाइप हमारे कंपटीशन होते थे कि हम आएंगे फर्स्ट, हम आएंगे. सो आई टेल यू, माय फर्स्ट पोस्टिंग वाज सियाचिन ग्लेशियर. आई विल कट इट शॉर्ट. सियाचिन ग्लेशियर में था. टेन्योर वेंट स्मूथ, बट एक ट्रेजेडी हैड स्ट्रक बिफोर आई जॉइंड. Just before I joined, there was a cloud burst in which we lost one JCO and 10 other ranks. So it was a big loss. Our equipment was all buried underground due to the cloud burst in 2010, in August, on 6th of August. Yeah. So things were quite desperate for the Paltan that time. Testing times, almost everything was lost, equipment wise, vehicle wise. Yeah. And how the Paltan bounced back. And then I was the first edition. I was the first officer to get commissioned after that incident. And within few months, it was confirmed that, okay, the way this Paltan has been performing, they have outshone other Paltans in their performance. And they bounced back, with a big bang. So they said, okay, this Paltan is worth nominating for United Nations mission. Right. And eventually we were selected, and I did my commando course, which was mandatory. I performed very well in it. And after that, I came back to the Paltan. Proper trainings hui, classes chali, orientation classes and programs were there. We prepared ourselves. And once I knew we are going to South Sudan, so एक DB ban lag jata hai. Basically, no other new officer will come to the Paltan once it is declared that the Paltan is going for UN, because then that particular set of officer only gets trained and joins. So I was the junior most among those 42 officers from all arms, other arms, and जो मेरे खुद के infantry के थे. I was the junior most. I was the lieutenant. And performed well in commandos, did well in physical, written, sab kuch. And then the most intriguing part is we were full of josh, but unfortunately in 2013, on the 10th of April, the flight that we were to board
that flight was getting the mortal remains of Lieutenant Colonel Mahipal. He Hmm. was from mechanized infantry, and four soldiers from the Maha regiment Right. who were martyred there. अब मैं क्या बताऊं, I was the one who was assigned to receive the mortal remains. Okay. So this was again a growing factor in my life, Hmm. that you've seen you going and receiving and getting the mortal remains of a senior officer. And this was the first time, या इसके पहले, like when you were serving in the Siachen, तब आपने ऐसा and देखा था? Siachen में I did there was an avalanche which had come in 2012 के ending में, and in NG वहाँ पे there was a soldier from the Rajif regiment only, Karan Singh from Rajasthan. Okay. So his mortal remains I handled again there. Yeah. So that was the first time, yes, I had actually seen the mortal remains, the martyrdom of a soldier. Yeah. Then second time was this in UN, but here there were like 5 of them. So that was like quite a number, and yeah, there were a lot of emotions which were running, because you are aware you are going to go into the same firing zone where these mortal remains are coming from. Same flight came on 9th, cargo terminal side, got the paperwork done, and I received the mortal remains. Then there was a wreath laying ceremony, सब कुछ हुआ. That psychologically pepped me up also. मेरे को जोश आ गया था कि यार ये क्या है, ये नहीं होना चाहिए था. तो मेरे में जोश भी फुल था, एंड मुझे फियर ऑफ द अननोन भी उतना ही ज्यादा तंग कर रहा था मन में, कि क्या होगा. बट वही है ना, दृढ़ निश्चय एंड स्टबर्ननेस, है ना. कई बच्चे होते हैं ना, बच्चों में बेटा ये नहीं करो, वो वही करेगा. तो मेरा वही हाल था कि I was uneasy about the factor, but I was determined to face it. और मैं then we went, हाँ, ये mortal remains को हुआ. Then 5 or 6 flights went. I reached, I think, around March, April में my flight was there. There were total of 9 to 10 flights, Ethiopia Airlines की. So I reached in the month of ending of May. I think I reached on 20th or 25th of May, and 15th May को मेरा engagement भी था. Okay. So mine was arranged marriage. So and hats off to my wife. मैंने पूरा convince किया उसको. I will not be available when you need me the most. You will have to be like the man of the house. You will have to handle everything. And कई बार तो बात भी नहीं होगी महीने. And trust factor has to be very important. मतलब मैंने बोला at the end, मैं कह रहने दो, don't marry me यार, मेरा कोई भरोसा नहीं है कि कल है या नहीं है. And I told her this, so she said, yeah, you're right, and I'll think about it and let you know. And सरदारनी तो है ही वो. हाँ. तो अगले दिन उसका अपने आप आ गया मैसेज through her parents to my parents की the girl has said yes. Okay. Then the chemistry with my wife and self became more strong, and because despite I telling her the odds and the risk that I might not even come back, things are very bad there, and things are not as pushy as it was earlier. So I'm going into a war zone, so the odds are very much there कि कुछ भी हो सकता है. And you went, मतलब 2013 की बात है जब आप जा रहे थे. हाँ, we went in April में चले गए थे सर. Right. And 2012 or 13 is the time जब वहाँ पे civil war start हुआ था in South Sudan. नहीं, civil war उनका 2000 and I think 8 या 9 में die down हो गया था 2008 में, and then it was peaceful. I think after that this was the first major attack which happened in a state called Bor, in the state of Jonglei.
जोंगले में बोर 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 जगह थी, बोर में हुआ था ये। हम्म एंड इवेंचुअली वी वेंट इन। तो पहले 6 महीने तो हम अलर्ट भी रहे, पहले 2-3 महीने, एंड देन वी रियलाइज एवरीथिंग इज नॉर्मल। हम्म देयर इज अ वेरी ईरी काइंड ऑफ अ काम, मतलब एक बहुत ही आपको तंग करने वाली एक चुप्पी रहती है, हम्म वो थी फुल टाइम। मैंने ओके कहा यार इंडियन आर्मी ने शायद गलती से भेज दिया हमें यहाँ पे, तो कुछ है तो है नहीं यहाँ पे, देयर इज नथिंग हैपनिंग हियर। एंड द फर्स्ट रिपोर्ट स्टार्टेड कमिंग इन जुलाई हम्म इन 2013 की प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बीच तनातनी शुरू हो गई है। बिकॉज दोनों अलग अलग ट्राइब से थे। ट्राइब के थे। तो राइट। सलवा कीर, मिस्टर सलवा कीर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ सुडान, हम्म and Mr. Riek Machar was the vice president of belonging to the Nuer tribe, हम्म and Salva Kiir sir was belonging to the Dinka tribe. राइट। तो इनका 1992 में पहले भी एक मैसेकर हो चुका था दोनों ट्राइब्स के बीच, मेजर वॉर, इन विच द Nuers were massacred at a large scale. तो ये वाला coup was initiated by the Nuers to राइट। overthrow the Dinka tribe and take over South Sudan. एंड Now, जस्ट बिफोर हम इस कॉन्वर्जेशन को और आगे ले जाए, ऑडियंस को ये बता रहे थे बिकॉज साउथ सुडान वहां पे इंडिया जैसा या जैसे यूएस वगैरह में व्हाइट एंड ब्लैक के बीच में था, लाइक वहां पे रेस के मैटर्स बहुत होते हैं। इंडिया में इट्स मोर और लेस बिकॉज ऑफ रिलीजन। सुडान में ट्राइबल्स के वजह से, ट्राइब्स के वजह से होता है, एंड देर आर अराउंड 64 ट्राइब्स ओवर देयर, एंड उनके बीच में हमेशा ये ऊपर नीचे चलता ही रहता है। तो यू वर देयर एट द टाइम जब ये coup d'etat हुआ था। yes, this coup had taken place. पहले तो initially they had difference of opinions शुरू हुए, and वहाँ पे tribal war is usually regarding grazing ground, because their cattle is their main means of life. फार्मिंग तो इश्यूज है वहां पे grazing बहुत। grounds, one tribe cannot enter somebody else's grazing ground. हम्म ऊपर से then that vengeance part was there in the mind of Moors. So eventually on the first week of December in the capital Juba, वहां पे ये coup हुआ, a failed attempted coup by the Nuer tribe to assassinate Salva Kiir, Dinka tribe. And by 5th or 6th of December 2013 हमें खबर मिल गई थी कि in the state of Juba there have been approximately 600 killings, and road पे tanks आ चुके हैं, troops are seen everywhere, and that cleansing type, ethnic cleansing type कुछ माहौल शुरू हो गया है। तो all the Nuer tribes ran away from Juba. As a result, जितनी भी states थी ये जब खबर फैली, तो लोग जितने भी Nuers थे वो अलग अलग हो गए, वैसे भी अलग अलग ही रहते थे, बट ये Nuer tribes वाले हमारे यहाँ पे आ गए UN कैंप में। हमें खबर मिली इन्फ्लक्स हो सकता है, तो आप तैयार रहना। अब ये तो इट वाज अ लॉजिस्टिक बेस, इट वाज कितना 500 बाय 500 मीटर्स, आधे किलोमीटर बाय आधे किलोमीटर का एरिया था। राइट। तो इसमें तो हमारा बेसिक चीजें थी, वी हैड नथिंग एल्स। एंड बाय द डे 8th और 9th ऑफ दिसंबर जब पता चला कि ये प्रॉब्लम चल रही, वी वर स्टिल क्वाइट, बट तब हमने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। मेरी तो खैर वायोस के लिए, यंग ऑफिसर कोर्स के लिए मेरी ट्रेनिंग पहले से ही शुरू हो गई थी यूएन में। सो आई लैंडेड इन मंथ ऑफ मे मंथ से ही क्लासेस शुरू हो गई थी कि एमएमजी कैसे चलानी है, ठीक है, एजीएल कैसे चलाना होता है, स्नाइपर राइफल का कैसे ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। सो ऑल द मेजर वेपन्स, आरएल का कैसे हैंडलिंग होता है, कैसे फायर करना है, सो मेन एंड मेजर चीजें हमें आइडिया हो गया था कैसे करना है। And the best part is we were lucky that a new consignment of vehicles and around 12-13 containers of ammunition had arrived in the month of October from India. वो उन्हें चले हुए almost 6-7 महीने हो चुके थे इंडिया से। So via Kenya they arrived at a location, जिससे हमने फिर कैंप को और अच्छे से फोर्टिफाई किया and रखा and everything. So once
ये then by on 20th of on 19th of December, 19th to 20th of December, our location at Akobo was attacked, where they shot 43 refugees in the UN camp. Okay. Point blank range पे, pregnant females, young girls, boys, elderly, men, women, all were shot by the rebels. So it was a massacre. It was, you could say, a kind of a massacre. They basically surrounded the camp. Camp was basically, I think, a platoon strength का ही था. तो पूरा उन्होंने cover कर लिया था. Thousands of them who were pro UN, obviously looking at the situation, changed sides. So धोखा भी हुआ हमारे साथ. And but these are learning things in life कि धोखा हम कह सकते हैं, but why would they give up their life? Right. वो भी वहीं के लोकल ही थे ना पुलिस वाले. They knew कि they will take UN का side, they will be shot. And जो भी rebels थे, they were high on drugs. Yeah. बल्कि जब हमारे हथियार चोरी कर रहे थे तो एक 51 mm मोटर होती है. वो मोटर कौन लेके जाएगा, उसकी आर्गुमेंट में दो रेबल्स के आपस में लड़ाई हुई और एक रेबल ने दूसरे को गोली मार दी. ओके. सो देयर इज वहां पे देयर इज नो वैल्यू फॉर लाइफ एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम अमंग्स द रेबल्स. और ये सारे नुअर ट्राइब के थे. राइट. हु वर द अटैकिंग ट्राइब. राइट. एंड दे शॉट ऑल द दिनकास जो वहां उस एरिया में कोबा माइनॉरिटी में थे, उनको मार दिया. एंड देन दे शॉट 2 of our जेसीओ साहब्स. ठीक है, हमारे 2 जेसीओ साहब्स को शहीद हो गए. देयर इज अ बॉय नेम मंडल फ्रॉम आई थिंक EME का. he was injured, he was shot in the chest. Okay. So immediately that very moment, जो actually तब commanders change हो रहे थे हमारे. तो हेलीपैड पे BMP गया था to get them. उस दौरान when the rebels knew कि ये चाह चुके हैं, they surrounded, हथियार वगैरह लेके ना चुपचाप सराउंड कर लिया था. So while the BMP was coming back, then they realized कि mob ने BMP को रोक दिया है. So there a lot of this was a very controversial incident that has happened, you know, because nobody opened fire. Basically, हथियार तो सिर्फ गार्ड्स के पास होंगे ना, 3-4 जनों के पास. But these guys just stormed in all of a sudden. हमें लगा रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स है, पर धीरे धीरे वो अपनी शॉल कपड़ों से ऐसे AKs निकाली उन्होंने कैंप के अंदर. So we realized they have taken over the camp without firing a bullet. आधे झूठ बोल के आया, हमें हेल्प चाहिए. So once they barged in, and that is it. So then they looted the coat and everything. ये सब हुआ. मतलब these things were there, but the thing was that majority of our soldiers came back alive. ठीक है. So basically वहां पे क्या हुआ था ना, UN camps are sited at the outskirts of the city. Right. So this was located there, but over the years, the tribes felt more secure around the UN camp. So they slowly built up their living area to the settlements east, west, and north of the camp. अब पीछे तो river थी, तो in a way, over the period of years, this camp in Akobo automatically got surrounded by people who actually came with the notion of feeling secure. But eventually वही है कि जब ट्राइबल वॉर, जौन से ट्राइब ने धोखा देना, तो उसी की वही निकले सराउंडिंग वाले. So things backfired there. But thankfully there were no fatalities other than our 2 martyred JCOs. And next day a helicopter went, rescue team went, got them all back. And we disabled our BMPs, our vehicles, and took away the steerings and electronics we destroyed of the BMPs and everything. So we came back tactically कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिबेल्स ना यूज कर लें. तो बेसिकली हम उसे, जैसे यूएस नहीं अबैंडन करके आया था अभी अफगानिस्तान से. अफगानिस्तान से. तो सिमिलरली वी आल्सो डिस्ट्रॉयड आवर इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम्स, मदरबोर्ड, चिपसेट्स एंड एवरीथिंग. तो गाड़ी चल ही नहीं सकती. अब क्या कर लोगे. ठीक है, स्टार्टर्स निकाल के हमने डिस्ट्रॉय कर दिए थे इन सब कुछ. सो इवेंचुअली वी केम बैक, एंड देन
on the 22nd of December, my CEO said, okay, पहले तो उन्होंने बोला I am going to promote you out of turn into captain. तो मैं कहा राइट सर. तो 22-23 दिसंबर को मेरा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन कर दिया in South Sudan to a captain. मैं कहा राइट सर. And then he gave the first task given to me by my CEO then, Colonel Manish Sharma, Sena Medal. So Colonel Manish told me कि but he told all officers, I don't care, but I need a post which can tell me what is happening around us. Because वो तो पूरा प्लेन है ना, एंड हमारे कैंप के बाजू में जो घास था, जंगली घास, इट इज बेसिकली कॉल्ड सरकंडा. तो सरकंडा 7.5-8 फुट इतना ग्रो कर गया था, 2-3 किलोमीटर तक ऑल अराउंड. तो हमें दिखता ही नहीं था कि आजू बाजू क्या है. तो एट दैट नाइट आई वाज जस्ट रोमिंग अराउंड द कैंप. घातक के साथ में रहता था, एंड आई सॉ वन पर्टिकुलर लोकेशन नियर द ब्रावो गेट कि मैंने कहा यार यहाँ पे कंटेनर तो रखा हुआ है. मैं कहा व्हाई डोंट वी पुट 2 more कंटेनर्स ऑन टॉप. तो आई वेंट टू द यूएन ऑफिशियल, जो फॉरेनर था, जॉर्जिया या यूक्रेन का था, द यूक्रेनियन. I told him, I need your crane operator right now, and you have to put 2 containers on top of each other. Right. And this is Toor OP, right? Yeah, this was then later named Toor OP. Yeah. So I took the initiative. I got it. I got the containers put. So there were now initially 2 containers put on top of each other. With time, आज की तारीख में वो 3rd container भी लगा दिया है. So, and the post is named Toor OP. The reason being is, after I created that post, it became the highest vantage point in the whole city of Malakal. Okay. After the airport ka ATC tower, this was the highest vantage point in the area. Wow. And once standing on that container, you could get a bird's eye view of up to 15 kilometers, 10 to 15 kilometers. पूरा 360 डिग्री की चल क्या है. एंड हमारे पास बुशनेल के स्पॉटोस्कोप्स थे, स्नाइपर के टेलीस्कोपिक साइट्स थी, तो उससे वी गॉट अ वेरी गुड व्यू व्हाट इज हैपनिंग. एंड थर्मल इमेजिंग भी थे डिवाइसेस. सो 22nd को मैंने ये बनाया. 23rd को, but this wasn't named Toor OP initially, it was named after a few months. Yeah. So reason what happened was कि then जो भी reinforcement rebels की आती थी, I used to see, मैं पहली वार्निंग दे देता था. So the first attack that took place in the around the camp, 28 people died due to crossfire only. Okay. And I was on the container. उस टाइम मैं देख रहा था ना कि क्या हो रहा है. एंड मैंने बस I just informed on the radio set कि सर they are about to attack, यहाँ पे आपस में भिड़ने वाले हैं लोग. उनके क्रॉस फायर के चक्कर में हमारे कैंप में 28 लोग मर गए, सिविलियंस. एंड देन वी ऑल फेल्ट कि दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी टोल्ड टू एवरीबॉडी. क्योंकि हम तो सेटअप ही कर रहे थे, 2-3 लोगों के पास ही रेडियो सेट थे. देन आफ्टर दैट फर्स्ट अटैक ना, देन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, मतलब 25th December onwards, 25th December को हम पे अटैक हुआ था. देयर इज अ वीडियो ऑन द न्यूज़ चैनल, टाइम्स वाले न्यूज़ में. सो उसके बाद देन वी रिपल्स द अटैक, बिकॉज यू नो आफ्टर द रिबेल्स अटैक दे रियलाइज कि दिनकर ट्राइब वाले तो यूएन कैंप में आ गए हैं सारे. सो इट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि यार सारे दुश्मन एक ही जगह इकट्ठे हो गए, लेट्स अटैक द यूएन कैंप. राइट. So we were surrounded by hostilities and fire भी उन्होंने try किया था कोशिश करने का, but we had such heavy massive fire power with us that हमने BMP का भी fire किया उन पे. And when BMP fires, can you take the audience through कि मतलब क्या हुआ था exactly उस, मतलब when you were repulsing, तो exact क्या हो रहा था? मैं बताता हूँ. ये this is the date, आपको वीडियो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है. This happened in the early hours of the 25th of December. Toor OP established हो चुकी थी. We were there. जो भी पोस्टर बना सकते थे बन चुकी थी.
machine guns were there, AGLs were there, ठीक है, and rocket launchers, BMPs platforms पे सब लग चुका था. But still there were plus and minus था. But that was the first time we were occupying. क्योंकि पिछले 8-9 साल से तो कुछ हुआ नहीं था वहां. Right. तो बीएमपी का रैम भी हम बस जल्दबाजी में ही बुलडोजर से मिट्टी डाल डूल के प्लेटफॉर्म हाई करके खड़े कर रहे थे. सो आई टुक द स्नाइपर राइफल विद मी, द ड्रैगनऑफ and 7.62 वाला, and I had a LMG with me and my own personal weapon inside and a Glock pistol. तो सामान हम पूरा लेके गए थे, and binoculars, thermal imagers, everything. So in the early morning at around, मैंने पहले रिपोर्ट दे दी थी around 5:30, वहां पे तभी अंधेरा था, तो मैं थर्मल इमेजिंग के थ्रू कि सर रीइंफोर्समेंट्स गवर्नमेंट फोर्सेस की इकट्ठी हो गई हैं. And the way they were aligning themselves were facing northeasterly direction. Right. That's a trench खोद के ना. हाँ. So then I logically said, man, sir, I think attack will be coming from the northeasterly direction. How can you say that? मैं कहा सर क्योंकि साउथ वेस्टर्नली डायरेक्शन पे they all have lined up facing northeasterly direction. तो he said, हाँ वैसे लॉजिक है तेरा, बिकॉज हमारे पास इनपुट तो कुछ था नहीं कि अटैक कहाँ से आने वाला है. So then we all also aligned ourselves into that direction, northeasterly direction. And exactly at 6:45, a swarm of 5,000 soldiers, rebel soldiers, ठीक है, rebel army वाले, around 3 to 5,000 के बीच ये सारे stormed around our camp. And there was a total मतलब proper war. मतलब लाइफ में मैंने, and I don't think anybody in today's time would be experiencing that a ready army of 600 to 800 troops or maybe 1,000 troops is firing back at a charging group of rebel soldiers. So this is basically 600 versus 5,000. Yeah, 600 versus 5,000, and we were 400 of us. Not even 400. We were around 250 to 300. बाकी तो हमारी नफरी फिर भी बटी पड़ी थी इधर उधर. तो हम 250 से 300 ही थे. And they repulsed the attack. But उनकी इतनी casualties हो गई थी कि you know what the rebels did? First they came in the northeasterly direction from the camp. They attacked them. हम पे firing हुई. We were told to fire below the waist. But with the number of rebels that they were, we had to select appropriate place to actually incapacitate me, to eliminate them, because we had no choice. Right. इतने ज़्यादा थे, we would have been easily overrun. But then we started with the firing back, and our accurate hits were so many that firstly we lost count how many we shot down. The rebels. ठीक है, there could be in hundreds also. Yeah. So the rebels got to know कि यार go away from the UN camp now. Because earlier Adi, they had distributed the teams कि तुम कैंप में ये वाले इनको मारोगे, दिनका वालों को जो अंदर हैं, तुम एयरपोर्ट वाली साइड जाके एयरपोर्ट को कैप्चर करोगे, which they did. They took over the airport. ठीक है, and then they surrounded the camp, they blocked the roads. बहुत सारा सीन हुआ था. And then there was a lot of proper firefight. It was a chaotic scene of proper war. There's a movie, Siege of Jadotville करके. Jadotville, yeah, on Netflix. Yeah. But it was a similar situation. And we were lacking manpower, we were lacking fortified positions, and the fear of them jumping in from different parts of the fence was there. Yeah. तो उस टाइम तो हमारा फेंस भी 7 फुट ही था.
वो होता है ना, layering of fences was also never made there. Right. So and our UN state coordinator was Deborah Sheen. She was American. There was another person from the US forces there, named Sean Rhodes. He was part of the UN police. ठीक है, so he was a cop from America, from Rhode Island. Yeah. So these guys were also there amongst us, and in fact, I have sent you a few pics. So उसमें Sean Rhodes is with me with a South Korean officer, Officer Kim, Major Kim. Yeah. He was a part of the engineering team. So we became so good friends, and he told me that, Captain Samar, if there is an attack, where will your team be? I said, stay maximum away from my team because we will be facing the maximum brunt. Wow. So he said, I need your weapon during the fight which is happening. I don't have a weapon on me. So I kept a spare in SARS with good 300 rounds with me, that in case if something happens, so I would actually, help him by giving him this weapon and ammunition to help us, or to help him protect himself. कि खुद को बचा लेना, but this is what I can do at the maximum. Yeah. And attack eventually unfolded. I would not say genocide or massacre took place. Trenches mein soldiers were shot. And on 22nd December, Ugandan special forces के soldiers आए थे सारे. They came in, अंदर आ गए थे सारे, in the city and around our camp. But they never knew how to exit the city. Okay. Route in तो वो बता दिया था, जैसे अभिमन्यु का चक्कर व्यू, अंदर कैसे आना है पता है. In case they are overpowered and overrun, how to move out from there tactically, they did not know. So eventually these Ugandan special forces guys were massacred in the trenches only. Okay. Yeah. And most of them jumped into the river Nile, swam across, few ran away, came back to our camp without any clothes because they were in the uniform. Was abandoned करके naked ही. कई लोग, there were 2-3 officers of the Ugandan special forces who came to our UN camp. वो wet skin trench foot type नहीं हो जाता, trench foot. तो वो 1 से 1.5 दिन यहाँ तक पानी में ही रहे. Okay. At the banks of river Nile, कि यहाँ से बाहर निकलेंगे तो we'll be shot. Yeah. So they kept themselves in the water. They took turns to hold each other. And then on the 3rd day, they came to our camp, totally naked. And once we took them in, I asked, मैंने तो दिए, मैंने उधर कपड़े मैं ढकवाओ इनको. They said, नहीं, we are soldiers. तो इनके लिए एक separate enclosure होता है. It's like a prison, something kind of a thing, enclosure where they are kept and civilians are kept separate. So they were kept separate there, and they refused to eat UN food. Okay, why? They said it could be poisoned by the newer tribals or refugees in the camp. Okay. They refused to eat food. All the troops, जो भी Sudanese army का था, Ugandan forces के थे, यही थे initially, तो newer का तो था नहीं. So they were in that camp का अलग से fortified जगह. So they told the UN officials, कहते, get us the food that Indian officers and soldiers are eating. We will eat that only if they get it to us. Otherwise, we will not eat food. Okay. They outrightly refused. कहते इसमें poison होगा. Then ऐसी possibility होती है कि होगा poison? हाँ, मतलब there's full possibility, anything can go wrong. Okay. वहाँ पे I think from the 20th of December जब ओकोबो में हुआ था, within the 4-5 days we had around 20,000 refugees inside. Wow. अरे it was jam packed and the kind of stench, वो जो smell आता है, ना सीधा सर में लगा कि भाई कहाँ है ये, कि कैसे आ गए. Toilets were blocked. ठीक है, overflow हो रहे थे toilets. मतलब things were not good at all, just not good. पानी नहीं था. मतलब my CEO was worried कि भाई we have to arrange water within 24 hours.
because the refugees with children need water. They might start dying. Yeah. So in that thick of fire and everything, we negotiated with the rebels कि let us go to the river Nile and let us get the water from the tanker. फिर RO plant में process करके, that is how we started distributing water. Wow. Okay. हमारे कैंप के लिए भी पहले पहले 2 दिन तो पानी नहीं था हमारे पास. So third day morning we went for negotiations. Right. And then they told us that your people fired at our people. Rebels said. So कहते yes, for self-defense. Your men fired first at us. What could we do? You don't attack us. We are neutral. We will never attack first. Bus, and then they agreement and all. And इसी दौरान to get them on the negotiation table, हम उनके रेबल लीडर के बेटे को ही किडनैप करके एक्सट्रैक्ट करके ले आए थे मालगाल सिटी से. ओके. टीम हैड गॉन. ये कैसे किया फिर आपने? वी ऑफर्ड दारू. We were at a location where we offered him liquor, where we offered him he wanted to smoke a weed वगैरह सब दिया हमने. नशे में दूध करके फिर हम इसे लेके आए. अच्छा. ओके. हाँ. And telling them कि भाई he needs a ride in the BMP. हम इन्हें राइड दिलवाते हैं. तो कमांडर का वहाँ कपोला है ना, उधर ही हमने उसे खड़ा करवा दिया था. मैं कहा we'll take you. हम गए and then we vanished. We went into the camp and then we got the rebels speaking. So basically it was a very life-changing incident. There was a point of time where we were surrounded by 30 to 40 rebels. And आपने वो देखा होगा interview. We were surrounded. Fire was intense. And I had told my soldiers at one point of time that भाई अपने mobiles पे record the last messages you, जो भी आपको आखिरी संदेशा अपने घर वालों के लिए देना है, मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लो और रिकॉर्ड करके अपनी जेब में वापस डाल लेना मोबाइल. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे आखिरी पल लोगों को पता ना चले. लोगों को पता होना चाहिए हमारे आखिरी पल क्या थे. हम लड़ते लड़ते मरे थे. So मतलब उस पॉइंट तक पहुंच गया था वो. हाँ, it had come to that point that we were just face to face and we knew there is no heading back. And मतलब it was a very touching moment, a very tense moment, worrying moment in life. So बहुत सारे इमोशन आ गए थे. There's this one film, मतलब Netflix पे ही है ये शायद से, 13 hours करके. तो this is about वो एक बेंगाजी में जो इशू हुआ था. We were in this situation where they fired mortar on us. Mortars are the most fatal for us. क्योंकि हमें तो actually पता भी नहीं कि वो कहाँ पे आने वाली है, but it is very accurate. So once mortar fire began at our camp location, we went all guns blazing. बोला कि open up guys, open up. बस BMP तर ऐसा शुरू हुआ कि मतलब मेरे कान सुन पड़ गए थे with that intensity of firepower ना. And we didn't stop. We kept going on. And you were in fact, आपने कल हम कॉल पे बात कर रहे थे, you told me कि you were on SAW and आपने SAW को as a sniper use किया था. That was towards the office complex. NEP-BAT was there, Nepal Battalion. Now they are very small contingent. मतलब very less in strength, company strength. Their soldiers actually got off the post and ran and sat in the Casper, जो MPV mine protective vehicle है. And I was in a state of shock. And दूसरी पोस्ट से बाइनोकुलर से मेरी घातक वालों ने देखा कि वहाँ कैप्टन तूर का अकेला है और all the Nepalese have left that place. फिर मेरे पास भागे भागे 2 बंदे आए in the middle of the fire. And that post was with tin sheets and अंदर लगे थे sandbags. So I could hear the bullets, coming and hitting inside. बस it was just that sandbag और मेरे बीच मतलब टिन शीट के और मेरे बीच में सिर्फ सैंडबैग था and nothing else was there. And पीछे मेरे बिल्कुल 50 मीटर पे हेलीकॉप्टर खड़े करके रखे हुए थे. बिकॉज आइडिया हो गया था कि एयरपोर्ट माइट बी टेकन ओवर, तो हेलीकॉप्टर कैंप के अंदर ही आके खड़े कर दिए थे.
So there was a lot of UN assets, UN staff, सब अंदर था. And then we opened up fire, tuck 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 करके, and it was quite intense. It was not a very good sight to see. Yeah. The rebels dropping down, and but मेरे में वो devilish instinct भी था कि मरूंगा तो लेके ही जाऊंगा साथ में. Yeah. So we didn't stop for quite a while. And after I think 10 minutes, then one of the Nepali army का गोरखा came to me. कहते साहब मैं आ गया हूँ. मैंने कहा गुड यार, तू टेंशन ना ले, मैं हूँ यहाँ पे और फिक्र मत कर, पहले मैं ही जाऊंगा, उसके बाद जो करना है करना, पर अभी मैं हूँ तेरे पास. And after the debacle and this full day of firefight and everything, exhausted, no food, no water, बुरी हालत थी. And a few rounds entered our living quarters also. Damages बहुत हुई थी, collateral. Crossfire में few refugees were also hit. They were in the hospital, level 2 hospital में treatment के लिए. So it was overall chaotic, but yes, fatalities कम थी. हमारा own मतलब loss of मतलब life नहीं था. And that was after that, then everyone had full faith, trust, and पूरा भरोसा हो गया था कि यार ये नहीं हटेंगे पीछे ये Indians. And the Nepali boys clicked photos of me with their full contingent. कहते सर it is an honor, मतलब हमें फकर हो रहा है और साहब प्लीज गलती होगी कि हम लोग ऐसे मतलब नहीं आ सके क्योंकि हमारे पास कोई था ही नहीं बंदा. मैं कहा मैं हूं ना. कहता मैं था, मेरे बंदे थे आपके साथ और अभी भी हैं और हम इकट्ठे ही हैं, कोई कहीं नहीं गया था, बस आपको एमपीवी व्हीकल में गए थे ताकि अगर हम खत्म हो जाएं तो आप आके हथियार संभाल के फायर करते. So indirectly I gave him a justification also what to say, so that he doesn't have to face the brunt or lose his job या जो भी inquiry होए जो भी होए. So I never mentioned it to them at that point of time. And then these Gorkhas were like a big fan of mine. And then they asked me, साहब आपका पूरा नाम है का कैप्टन समर पाल सिंह तूर. कहते आप क्या हो, आपका जात क्या है? तो मैंने कहा मैं सरदार हूँ, मैं जट सिख हूँ, तो पंजाब से हूँ. कहते अच्छा, कहते तभी. I kept shut. I didn't reply because I usually don't involve or indulge in long conversations. तो I just asked them, सब ठीक, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? कहते नहीं साहब, अब कोई दिक्कत होगा भी नहीं. That's the amount of confidence they gained from we the Indian forces operating. They were like, यार इन्होंने संभाल लिया, they are there, it's okay, we will be in support with them. So that first breaking of the ice was that day, 24/25th of December. Right. And हम पे प्रेशर था क्योंकि 24 दिसंबर को मलाकाल सिटी का जो गवर्नर है, he came and took refuge in the camp. And हमारे चीफ ऑफ ऑपरेशंस ऑफिसर थे, he literally told him next day कि sir you have to leave. As per UN mandate, we cannot keep a government figure here as a refugee. You are part of the government. Your armed forces, SPLA is outside. You have to be there. They are going to give you protection. We cannot. It is against our mandate. Then we spoke to the American state coordinator, Deborah Sheen ma'am. She also said, please have him removed from here. He is going to attract more trouble in the camp. हाँ, मतलब उनके पीछे पीछे सब ट्राइब्स आ जाएंगे वहां पे. Exactly. तब वो that was what was happening. Right. Then safe house से निकाला. Got him to the main gate. वहां पे उसके गार्ड ने अपनी MP5 ना कॉक करके मेरे ऑफिसर पे ऐसे रख दी. Okay. हाँ, that we are not going to leave. And मैं ऊपर था, तो I just gave them, brother, look here. उसने ऊपर देखा, मैंने MMG कॉक कर ली. MMG कॉक करके I put it onto them. Right. I said one is enough to just wipe you out. One bullet at this velocity will wipe you out. I said don't, trust me, and I'm not joking.
and I can give a demonstration. You want me to fire first? मैं कहा सर बताओ किसे मारे, इसको या वो दूसरे वाले को? कहते समर यार टैक्टिकली, मतलब यू टॉक इन हिंदी, कहते यार थोड़ा ध्यान से संभाल, दिस गाय इज पॉइंटिंग द वेपन। मैं कहता सर अगर वो कर रहा है तो मैं भी तो कर रहा हूँ ना उसके बॉस पे, वो क्यों कर रहा है? उसे बचाने के लिए, वो ही नहीं बचेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है करने का। तो फिर उसने फिर बोला माय जो सीनियर ऑफिसर थे, चीफ ऑफ ऑपरेशन, कि सी ब्रदर इफ यू डू एनीथिंग टू मी he will not leave any of you. So it is wise that you leave this gate right now. Then he looked up on me and he said, I will see you. Maka, I'm standing here, see me now. Wow. You want to talk to me? Come. तो चुप, उसने मैगजीन उतारी, कॉक करके वो राउंड निकाला, डिसार्म किया अपना हथियार। मैंने फिर बोला गेट के गार्ड्स, वो भी कॉक करके रेडी थे, मैं कहा गेट खोलो, इन्हें निकालो यहाँ से। Then they were asked to move out. And then I think on 25th after evening 4 o'clock SPLA retreated. They left. वो पूरा उनका जो बचे हुए सोल्जर्स थे कंटिजेंट इकट्ठा होके छोड़ के चले गए। That is a time where we felt vulnerable कि यार अब तो कोई है ही नहीं। Rebels have taken over the airport, city is cut off, and there's nothing. We were the only wholesale people left. बाकी सारी सिटी तो हमारे कैंप के अंदर आके बस गई थी। And we had not a place to step foot also. Okay. And I was given the name of an Indian ninja. This is interesting. I always wore a patka. So psychologically एक aura और हवा बन गई थी कि people never knew me by my face. But they knew कि यहाँ पे इतना पटका और ये सब लगा के आई है और weapons और ये सब लेके आ रहा है बंदा। So they used to start cheering, you know, कि भाई Indian ninja is here, Indian ninja is here. And so they used to make way for my घातक। Wow. जहाँ पे भी trouble होता था ना, they used to make way कि उधर 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 go there, that side. So that kind of respect we actually earned over there by our actions, by protecting them and fighting the rebel forces. You know, that is the respect we gained. Right. And I had men come to the gate with amputated hands, 2 दिन पुराना, यहाँ AK टंगी हुई है, वो अपना हाथ निकाल के ऐसे कर रहा है। I want to meet doctor. He fixed my friend. He fixed my hand back. ऐसा हाल था. Okay. And we used to confiscate the weapon, send them back, and after 2 days, the same chap is walking out with a glucose ka drip in his hand, one hand, with amputated hand, coming to the gate and saying, "Give me back my AK. I have to go and fight the battle." Wow. तो मैं डॉक्टर को कॉल कर रहा था लेवल 2 हॉस्पिटल में कि सर ये तो आगे उठ के कहता भाई जाने मंदिर। मैं वो तो कह रहे बाहर उसके बंदे आए हुए लेने गाड़ी में। कहते भाई वो तो अभी उसको तो ही हेवीली सेडेटेड। मैं कहा कुछ नहीं, मैं ठीक ठाक चल रहा है पैदल। नहीं सर इसे कुछ नहीं हुआ, आंखें लाल है और कुछ नहीं हुआ इसको। कहता भाई जो करना है करो यार, भेज दे यार इसको, बोलना अब आएगा नहीं वापस। Right. And this guy went, sat in the SPLA की गाड़ी and went off. Wow. Very strong people of South Sudan. Even after getting injured, they never cry. They never shed a tear. I had seen a man with a blown out jaw. This part was missing. Okay. इसका आधा part था, this part was gone. I could see his inner side पूरा. Yeah. And this guy came like this and pointing out. Okay. No noise. कोई वो कुछ नहीं. This guy was sent a reconstructive surgery of ऐसे हेप्टर में अगले दिन स्पेशल केस के तौर पे भेजा गया. And वहाँ पे तो doctors were trained for gunshot wounds and everything. Yeah. But जब you are dealing with the population of 28,000 refugees, वहाँ पे 128 deliveries were carried out by these doctors who never knew कि delivery करनी कैसे. They were under tremendous stress कि वो neat vodka पी के they used to keep themselves focused. Okay. Concentrated कि नहीं लगे रहो. They are exhausted. Their aprons filled with blood. और मैं
ऐसे रिबेल्स को ऐसे ला रहा हूँ, है ना, घसीट के कईयों को हाथों में ला रहा हूँ, रख रहा हूँ वहां, मतलब ऑपरेशन थिएटर का वेटिंग रूम फिल होके बाहर मैंने लंबी लाइन में लिटा दिया था बंदों को, वर इंजर्ड। ओके, एंड यू वर माय ब्रिंगिंग, बॉडी मतलब रेबेल्स को भी एटलीस्ट, आप ला रहे थे? वी आर यूएन, वी कांट हम्म, टेक साइड्स। या, For self-defense, we were firing and shooting them down. But whoever was coming at the gate with injuries, we were calling them and treating them. Because we have to be fair and just. We cannot take sides. yeah, Our main mandate is to protect the UN staff, UN property, and follow the UN mandate. And वो पहले पीस कीपिंग था, then it became peace enforcement mission. So things changed drastically over there. right, And the kind of जो बैटल चला उस दिन रात को सुबह, the amount of rounds, I lost contact of the ground. मैं सिर्फ गोलियों के खोखों के ऊपर ही मेरे पैर थे, 2-3 मीटर तक, मतलब जमीन तो छुप चुकी थी इनसे, इतना हमने फायर पावर वापस किया था. We repulsed multiple attacks. And that is how our platoon was able to, you know, pull through. And we got a force commander citation. During war, किसी के पास टाइम नहीं होता force commander को भाई citation दे दो इनको, no. But that force commander took time out. There were a lot of commendations given. ठीक है, and gallantry commendation cards were given out. मेरा सेना medal के लिए name had gone. So there's so many things, you know, at one time happening. But this Ghana की army का था ये overall force commander, and he made it a point to come and meet us. He said, I want to meet this warrior tribe. Who are you? So you're like, we are the 8 Rajputana Rifles. wow, The Rajputs. And जिसमें जाट भी थे, and 25% जाट and 25% मुस्लिम भी थे, 50% were Rajput. And officers का तो we are all from all walks of life and all religions. So इतना सब हुआ ना, we felt honored, but we grew more mature. The kind of bloodshed we saw, we lost that little mischievousness in us. We lost that little casualness in us. We lost many unwanted things, but we gained even more bigger things like experience, maturity, selflessness, sacrifice, looking out for another brother to the left and right of you than yourself. You know, and taking care of the injured and getting them, you know, it was anger and compassion. And was this especially because ये आप मतलब अगर for example if you were in, like for example in Kashmir, land तो हमारा है, जितने लोग हैं हमारे, but you were there fighting for someone else, so was this because of that as well? नहीं, I'll tell you, Indian nature is such. So you know, teaching of Mahatma Gandhi are not ऐसे नहीं praise हुई है पूरी world में. We Indians treat guests like God. Yeah, Atithi Devo Bhava. Exactly. So we have more of a giving nature than a taking nature. Right. So we are more, we will always, किसी भी टू व्हीलर वाले का साइड स्टैंड निकलो है ना, we make all endeavors to put the शीशा down, overtake him, stop him, हाथ से इशारा करना, या किसी लेडी की साड़ी या चुन्नी आने वाली है, लिटरली पीछे पड़ जाते कि यार जल्दी बताओ जल्दी बताओ. राइट. तो ये बेसिक चीजें, ये नॉर्मल, इट इज नॉट नॉर्मल, इट इज समथिंग बियॉन्ड. ये हमारे कल्चर में इतना है, फैमिली ओरिएंटेड, एंड आप सोसाइटी में रहते हो, इज्जत से रहते हो, अच्छे से रहते हो, हेल्पफुल नेचर है, किसी को मना नहीं करना है फालतू में कुछ, है ना. नेवर हेट समवन. यू कैन डिसलाइक समवन, यू कैन नॉट लाइक समवन, बट यू शुड नॉट हेट समवन. राइट. तो ये सारी टीचिंग्स हम छोटे बचपन से लेके बड़े होते होते
That is why we are a contingent with a difference. हाँ, मतलब आई वाज आस्किंग यू कि मतलब जब आपने यूएस फोर्सेस के साथ भी काम किया है, आप जैसे बता रहे थे कि नेप बैट भी था वहां पे, तो बहुत सारे फॉरेन फोर्सेस के साथ में आपने काम किया. नाउ हाउ डू दे, लाइक फॉरेन फोर्सेस, लुक एट इंडिया एज अ मिलिट्री पावर? Firstly, our officers even go to US for staff college and everything, So our officers have recently been, not recently, but since quite many years, have been performing very well. In fact, our late CDS General Bipin Rawat was facilitated by the US Armed Forces in their staff college, in the Wall of Fame. There's a wall dedicated to CDS General Bipin Rawat. So we go to foreign countries also for the staff colleges, to Australia, to South Korea, to Vietnam, all these countries. So basically now people have started realizing the worth, because we are tactically sound. And for the future, we are surrounded by the most hostile countries in the world. They know it, that we are dealing with the Western neighbor, who is the very biggest enemy, and to the Eastern Front again, which is a very powerful enemy. So we know the threat assessment, whom to assess and at what degree of level of threat they are. But end of the day, it comes down to the one thing, that both are nuclear armed. Despite that, even we are nuclear armed. So that negates the nuclear aspect. That goes out of the window, that theory. कि कोई ये फेंक देगा, उस पे कर देगा, नहीं. And no first use भी है, बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, it's not an easy thing to take a call on this. But yes, militarily wise, China is very well aware what threat they are facing from us. I will not say कि अब हम on the defensive हैं, but we are on the offensive defense. Right. And Galwan उसका example था. Exactly. Galwan was a typical example of it, that they've got the message. That, it can't be that they mess around and we let go. They'll be given a befitting reply in a very effective manner, which will be remembered by them throughout. In fact, recently an Australian journalist has told that they have lost around 45 to 48 soldiers, जिसमें से कि 90% of them drowned in the river. जिन्हें पीट के नदी में फेंका था, they all drowned after the injuries. So things are not what they used to be. Tactically, we are more sound. We are better equipped now, and our army fights on the basis of willpower and equipment में भी नहीं, willpower. यार जब हथियार भी नहीं होते थे. You seen the movie केसरी? अगर आप सबने केसरी पिक्चर देखी है, तो हम एक बहुत ही एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं कि अगर 10 से 12 सरदार 10,000 सिखों को रोक सकते हैं, 10,000 अफगानियों को रोक सकते हैं, तो मतलब 10,000 अफगानी हैरान हो गए थे कि भाई इस किले में ये जो जितने भी 20-21 सरदार जितने भी थे, है ना, 21 सिक्स, बैटल ऑफ सारागढ़ी. अरे यार, ये 21 नहीं, ये तो बहुत ज्यादा लोग हैं. तो 1.25 लाख के बराबर था खालसा. सो the richness of valor हमारी इतना ज्यादा है आर्मी में. ब्रिटिश फोर्सेस वर्ल्ड वॉर 2 में कैसे कामयाब हुई थी? इंडियन सोल्जर के दम पे कामयाब हुई थी. Absolutely. आज की तारीख में आप मुझे बताओ कौन सी कंट्री है who is willing to face us in war? There's nobody. कोई भी विलिंग नहीं है. दूसरा, इजराइल हर साल हाइफा में इंडियन सोल्जर को उसका मेमोरियल बना है और वहां पे प्रॉपर सेरेमनी करता है. बिकॉज लिबरेशन ऑफ हाइफा में
राजपूत और सिख सोल्जर्स, जो सरदार थे रेजिमेंट के, सिख सोल्जर्स और राजपूत, इनने मिलके हाइफा को लिबरेट किया था फ्रॉम द जॉर्डेनियन सोल्जर्स एंड अरब्स। राइट। इमेजिन उस टाइम पे भी घिरे ही हुए थे, सराउंडेड बाय अरब्स एंड हॉस्टाइल अरब कंट्रीज, वेयर this lot of Indian soldiers decided on the orders of the British to defend and liberate Haifa, to give a meaning and existence to Israel. Right. So I am very proud to say that today we are the closest friends of Israel. Absolutely. We are like immediate brothers. Yeah. I wouldn't consider any other country other than Israel at the moment to be a true ally. Because they are in the same situation that we are today. Yeah. In fact, we too have been facing it for quite a while. They've been facing it, unfortunately, for many years. But we too have been into the same rut. हमें भी उतना ही कष्ट है जितना इजराइल को होता है. फर्क इतना है कि इजराइल चारों ओर से घिरा हुआ है, हम दो जगह से घिरे हुए हैं, बाकी पानी. ठीक है. एंड द डिफरेंस, मैं आपको फर्क बताता हूँ चाइना और इंडिया की आर्मी के बीच फर्क क्या है. हम कहते हैं चाइना की आर्मी के पास फायर पावर है, उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है, एयर डोमिनेशन है, ये है वो है. द ओनली थिंग दैट मैटर्स इन वॉर एंड बैटल इज जोश, जज्बा, जुनून, विल पावर, विच द चाइनीज आर्मी डज नॉट हैव. कम्युनिस्ट कंट्री है, बंदों को डंडा मार मार के खड़ा करवाती है ड्यूटी पे. राइट. एंड मेरा एक ऐसा देश है इंडिया, जहां पे स्कूल के बच्चे को भी बोलोगे यू आर रेडी टू डिफेंड योर कंट्री, वो बिना सोचे बोल देगा यस आई एम रेडी. ये फर्क है. एंड दिस इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस. ये ही फर्क है जो हमें जीत की ओर लेके जाएगा. राइट. तो ये ही लोगों को पता होना चाहिए. लोगों को पता ही नहीं अभी तक. एग्जैक्टली. एंड यही सेम चीज, लाइक मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था विद कर्नल प्रबीर सिंह गुप्ता सर, तो उन्होंने भी मुझे ये सेम चीज कही थी कि चाइना वहां पे लोगों को डंडा मार मार के खड़ा करता है. कल अगर वो डंडा मारना बंद कर दे, सब पोस्ट छोड़ के भाग जाएंगे. बट इंडियंस विल नेवर गो, बिकॉज हमारे अंदर वो है, हमारा कल्चर वो है कि वी विल डिफेंड आवर मदरलैंड. तो आपने भी वही. एग्जैक्टली. यस. यस. सो दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, that where you have the will to sacrifice, you will overcome and you will win. But जिस फौज में will ही नहीं है फाइट करने का, जिसको पता ही नहीं है कि वो किस रीजन के लिए वहां खड़ा है और क्यों है, see they are lacking a reason. We are not on the offensive. हम उनकी जमीन ही हड़पना चाहते हैं. वो हमारी जमीन, वो हमारी. करेक्ट. तो उनके ट्रूप्स को भी पता है कि जो वो कर रहे हैं गलत है. तो जो गलवान में वापस जवाब दिया है, दे आर शट अबाउट इट बिकॉज़ दे नो दे आर रॉन्ग. और आज का जमाना ऐसा आ गया है कि एक देश गलत कदम उठाएगा, उसके खिलाफ 20-25 देश और खड़े हो जाएंगे. राइट. पर अत्याचार और गलत चीज होते हुए कोई नहीं देखेगा, ना बर्दाश्त करेगा आज की तारीख में. सो दिस वाज द स्टोरी बेसिकली. अफ्रीका में इंडियन निंजा, हाउ आई केम इनटू प्रैक्टिस, how I helped the refugees. There was a point where I broke the rules. I will admit, I broke a rule. There were around 150 to 200 refugees right outside the Alpha Gate at Malakal camp. And firefight was about to begin. I informed firefight about to begin and I got a radio message, sir, यहाँ पे सारे बूढ़े बच्चे बुजुर्ग सब हैं यहाँ पे 200, ये तो यहीं गेट पे मारे जाएंगे. And I just literally threw my binocular aside, radio set लगाया, weapon लिया मैंने, मैं नीचे उतरा, पहुंचा, sprinted towards the main gate. वहां पे UN पुलिस के वो लोग थे, locals. I said open the gate. They said no captain, we cannot. Who are you to give us orders? What if they carry a weapon inside and there is a massacre in the camp? I said you leave that to me and my men to decide. You get them in right now, else I will ensure you pick up everybody after the battle is over. So are you sure about this?
मैं कहा, do you want me to speak in another language or another way? कहता, no, wait, relax, I'm opening the gate. मैं गया, I helped him, मैं ऐसे गेट खोला ना, at that moment of time, it was early morning, around 7:30. People were literally hugging me and, touching my feet, holding my hands. And that was one emotional experience which I could never let go. And I kept shouting because I did not have time at that moment to react to these things. But I knew within the back of my mind how much emotion was there, उन लोगों का ये actions में. And I shouted, मैं कहा, everybody come in to the right side. वहां पे एक वो था, ऐसे नाला टाइप सा बना था, सूखा था. I said, throw your stuff at the gate के साइड पे. And I said, यहाँ पे लेट जाओ. और लास्ट एंड में मैंने बीएमपी को बोला, उधर बीएमपी वाले को बोला, उधर अपना रिवर्स करके पीछे हो जा और मशीन गन रेडी रखना. अगर इनमें से किसी ने कोई गलत हथियार वाला या कोई उठ गया खड़े होके फायर करने के लिए, मैं को उसे ठोक देना. मैं मेरे पास अभी 200 लोगों की चेकिंग के लिए टाइम नहीं है. एंड देन आई गॉट देम इन, उन्हें लिटाया, देन आई लॉक द डोर एंड देन आई स्प्रिंटेड बैक टू द पोस्ट. टूर ओपी. एंड इवेंचुअली क्या हुआ, नाम कैसे पड़ा टूर ओपी का, कि कर्नल मनीष शर्मा, सेना मेडल, ही वांटेड टू कांटेक्ट मी. मैं पोस्ट पे नहीं था, मैं राउंड पे गया हुआ था. तो वहां पे हवलदार जितेंद्र वाज देयर, नाउ रिटायर्ड, he's in Gwalior with the police force now, with the Gwalior police. तो वहां पे टू कॉल मी, जैसे पहले तो मुझे 1-2 बार बोला, तो शायद मेरे रेडियो की वॉल्यूम कम थी या बैटरी डेड हो गई थी. तो वहां पे एवरीवन स्टार्टेड कि पोस्ट नंबर सो एंड सो फॉर टूर ओपी. भाई टूर ओपी पे कोई है? टूर कहाँ है भाई? टूर, वेयर आर यू? so and so for tour, come in over. Nothing, no response. फिर धीरे धीरे फिर सब टूर ओपी करने लगे. तो हवलदार जितेंद्र ने बोला कि टूर ओपी फॉर जो भी कॉलिंग स्टेशन साहब राउंड पे हैं, अभी आएंगे. कहते कोई तुरंत मैसेज, साहब बताओ कोई हरकत. जैसे हाँ ये हरकत है, जल्दी से बताओ साहब को. तो कई जगह से मुझे एक आध बार नहीं दिखता था, मैं नहीं भी होता था. So I used to alert. I used to have the communications with me, where I used to communicate to everybody that there's a consolidation of enemy at this area. तो वहां पे फिर BMP लाके मेजर नौटियाल होते थे then. Now he's Lieutenant Colonel नौटियाल. वो अपनी BMP लाके खड़ा कर देते थे. Loaded and running, ready to fire. Wow. And वहां पे सरकंडा इतना था ना. I took a call. I told my 2IC, सर मैं ये सरकंडा जला रहा हूँ सर, विजिबिलिटी है नहीं, रात को एम्बुश या इनकर्शन हुआ पता नहीं लगेगा. जैसे डू व्हाट यू लाइक, यू फ्री फ्रॉम आवर साइड टू गो अहेड. मैंने पूरा सराउंडिंग्स सरकंडे की जलवा दी थी. देन विजिबिलिटी वाज क्लियर. जो भी रिबेल्स वर शॉट, उनकी फिर जैसे ये सरकंडे जले तो उनकी बॉडीज हमें दिखी ग्राउंड में पड़ी हुई ना. दे वर बर्न्ड बट वी सॉ द बॉडीज. राइट. तो ये था. सिटी में अलग से बैटल चल रहा था, SPLA अगेंस्ट द रिबेल्स. रिबेल्स केम इन थाउजेंड्स. अरे SPLA की आर्मी रिट्रीट कर गई थी 25 दिसंबर शाम को. ओके. एंड वी स्टिल स्टूड आवर ग्राउंड. बट हाँ, जैसे दिल डूबने वाली फीलिंग नहीं होती कि यार दे बीन ओवरथ्रोन यार. गवर्निंग गवर्नमेंट की आर्मी इज बीन पुश्ड बैक. मैं कहा UN का एरोप्लेन, राशन, सब कुछ आता था एयरपोर्ट पे. वी वर लाइक यार नाउ वी हैव टू गो नेगोशिएट विद द रिबेल्स कि भाई हमें हमारा राशन लाने दो. तो वी वर लॉट ऑफ डिलेमास वर देयर, लॉट ऑफ प्रेशर था हमारे पे. एंड मेरी शादी थी 22 फरवरी को. ओके. 2014 22 फरवरी को शादी थी मेरी. आई हैड बुक्ड माय टिकट एमिरेट्स में, Emirate Airlines में. And the attack took place on the 17th of January. 17th of January rebels ने एयरपोर्ट को प्रॉपर टाइप टेक ओवर कर लिया था. Right. With no UN aircraft and it was such a scene. ये
ये डिपैकल हो गया था दिसंबर का. January started. First week nothing happened. Second week nothing happened. On the 16th/17th of January मैं सिविल कपड़ों में तैयार हो गया because we felt the worst is over. हम सॉफ्ट स्किन गाड़ियों में बैठे, रूटीन में यूएन फ्लाइट को आना था टू पिक अस अप, मुझे छुट्टी जाना था. The moment we reached the gates of the airport, दूर से ऐसे लगा कि पॉपकॉर्न कोई तल नहीं रहा है डिस्टेंस में, पट 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 पट. एंड धीरे धीरे हमने देखा आजू बाजू ना मिट्टी पे ना डस्ट धूल धूल के कण ऐसे ऐसे उठ रहे हैं. एंड देन एवरीबॉडी पुट देयर हेड्स डाउन, तुरंत यू टर्न लिया पूरी कॉन्वॉय ने, एंड वी केम बैक टू द कैंप. एंड माय 2IC वाज लाफिंग बिकॉज़ सबके लिए इट वाज अ बिग रिलीफ. You know, psychologically you're like, okay, we have Samar back. Yeah. So the energy wala guy, ki this guy will bloody run around, he will be Indian told, ninja. He will do what he's told, ye karega. Yeah. And the moment I came back, troops were literally cheering. They were not bothered ki saab ki chutti reh gayi. They were just concerned ki saab वापस आ गए. So they were cheering and they were all thumbs up. कहता आओ आओ साहब जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ. Then I went. I was अंदर ही अंदर से मायूस था. I was like कि यार wedding थी. Preparation was almost done. But luckily I went to my room before changing ना. मैंने UN के intercom के through call किया satellite phone के. I told my father, मैं कि airport has been taken over by rebels. We are safe, but I cannot guarantee what is going to happen next. But we are safe, don't worry. हम 250 से 300 बंदे हैं, ऐसे चुटकी मार के तो गायब नहीं होने वाले, don't worry. So my father said, जो भी है बंदों का ध्यान रखना और खुद का भी. Wow. तो मैंने कहा आप उधर बता दे, कहता don't worry, I am going to cancel everything, postpone, and I will talk to मतलब मैं in-laws, कहते हैं उनके साथ भी बात कर लूंगा. You just stay focused. That is, stay focused. Don't become lethargic or take it easy. तू अपना वहां पे ध्यान दे बस. और मैं कहा मम्मी से बात करूं, कहते नहीं रहने दे, मैं संभाल लूंगा. You just go ahead. कहता बस हो सके तो कॉल कर देना. मैंने कहा सैटेलाइट फोन से ही करूंगा. मोबाइल के टावर ऑफ कर दिए थे. 25 दिसंबर के बाद मोबाइल का टावर्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे. Okay. SPLA वालों, so that they could not communicate and coordinate their attack. तो मैंने तभी सैटेलाइट फोन से बात करता था. तो उस दिन भी मैंने सैटेलाइट फोन से बात किया था. थोरैया सेट होते थे. तो थोरैया सेट के थ्रू आई हैड कॉल्ड. मैं कहा भाई ये दैट्स इट, कैरी ऑन रिगार्डलेस, बट स्टे अलाइव. मैं फादर यही बोला लास्ट में, कहता टेक केयर ऑफ अ मैन एंड स्टे अलाइव, चल ऑल द बेस्ट. मैं कहा ओके. एंड आई नो on the second week of November when I came back to India, sorry, the second last week of November when I came back to India in 2014, my father was for the first time in his entire life, because see 2013 20th December को ये incident हुआ था. 20th December 2013 itself, I lost my grandmother, my dadi. Okay, so sorry. So, and I was very close to my grandmother, my dadi ma. So my parents never told me anything. But to keep asking, सब ठीक, सब बढ़िया, all good. So, and then my father retired in 2013. My father retired in 2013 September. My father is SS31 from OTA. Okay. So when I मतलब came back, the first time in my life I saw my father have tears in his eyes, and the way he hugged me, क्योंकि जब मैं आया वापस the induction, I did not tell them कि मैं आ रहा हूँ अभी वापस. Okay. We were just 22 days short of completing 2 years in UN. Right. And 2 साल से आप मतलब मिले ही नहीं थे? नहीं मिले थे. तो he was with tears and he hugged me. He said, शुक्र है तू आ गया यार. कहता जिंदगी में कभी ऐसे डर नहीं लगा जितना
तेरा लेके था. Then I दादी कहाँ है? He said दादी is no more. Okay. Then I was, so a lot many things, soldier sacrifices so much, fighting, doing his duty, and emotionally pressure में रहता है, and lot many pressures, Yeah. It is, मतलब कहते हैं ना, unforgiving kind of a environment in life. But we have to stay strong. खेल क्या उसने खेला जिसने कुछ ना झेला. तो हम, we are there to face the odds and we will face it because we are mentally prepared and ready. Yeah. आज की तारीख में I'm retired, but if given an opportunity to go ahead for an attack without मतलब thinking twice, I'll be willing to bash on regardless in the face of the enemy. And हो सके तो कुछ नहीं बचा तो मैं खुद पे ही बॉम्ब लगा के या ग्रेनेड लेके I will barge into the enemy. कामाकाजी वाली हरकत कर लेंगे हम तो दुश्मन के अंदर जाके. We are still that much motivated. इतना जोश जज्बा और जुनून है, वो तब आएगा जब आप सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होगे अपने देश के लिए. एंड फॉर दैट यू नीड आपको डिसिप्लिन, योर विल पावर, योर फोकस and your ability to learn and help others, compassion. You have to become a beast which has compassion when required and has ruthlessness when required while facing the enemy, right, or any other odd. So that is what we are. We are the gentle giants, the gentle beasts. Wow. Who are quietly sitting in a corner, but when awakened and the time calls, we are ready to even sell our soul to the devil, but overcome any problem to safeguard our people from the bad. Right. Wow, sir. And in fact, sir, मैंने इंडियन आर्मी से लाइक आई हैव टॉक्ड विद अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव रिटायर्ड नाउ, एंड सबने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट ये सेम चीज कही है कि आज भी अगर हमें कॉल आएगा हम जाएंगे, एंड वी वोंट इवन थिंक, 2 बार भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इट विल बी जस्ट आवर इंस्टिंक्ट, एंड दैट इज समथिंग जो पता नहीं मैं कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ. दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई लव टू डू आर्मी पॉडकास्ट, क्योंकि ये लोगों को पता चलना बहुत ज्यादा जरूरी है. Jayesh, I'll tell you why one of my major reasons to retire at 11 years of service is probably the amount of bloodshed and massacre and war. I think काफी limited officers ने आज के तारीख में देखा होगा. Other than those who were with whom I was in UN, that was that time I was baptized in war. I was baptized in the battlefield. Yeah. That is the time when I knew, when I saw these living souls fall like dominoes, tuck, 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 who were trying to kill us. That is the time where reality hit me. Either live. If you can't live, then you will be where the dead are. तो करो या फिर मरो.